Am I audible to everyone? Yes, ma'am, you are audible. Yeah. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, So, ma'am. very good evening to everyone. And maybe I'm new, or maybe some people are definitely new to me in today's class. So, we will have a little bit of introductory conversations. Then we will go to the topic of today, which is role play, which was posted in the groups. You already know, which is a role play session. So it is completely a practice session we are going to have today. Okay, so first let me ask, is anybody new to today's, means it first time attending my class? Anybody is there who is first time attending my class? You can just raise hands, or you people have attended at least one or two classes of mine. So I guess everybody knows me. Fine. Still, I'm just giving a little bit one-line introduction that I mostly take your communication classes, as you know. As many people joined earlier, many people joined a little bit late in the batch 5 group. Okay, so definitely you people know, who have already attended the classes, that this is a communication class, and today's classes we had different classes which will be again repeated in future also. For the new joinees, you know that you will be getting those classes again. So we had classes on interviews, we had classes on PPT presentations. Many people from the last batches have already given beautiful presentations, which I guess you people have attended also. So communication is a part of everything, as we know, isn't it? It is a part of our life, personal or let's say professional. In every form we need communication, but the problem is, in personal life we are not so much concerned about the communication. We are very used to it. We don't have to think about the rules and regulations, aise baat karna hai, waise baat karna hai. It's not like that. Informal communication, whether it is in a corporate, in your job, in an interview, in a presentation, or in your life, in your professional life, as all of you are dietitians or nutritionists. So in your diet counseling, patient counseling, you have to follow certain things. You have to remember certain things to make it effective. Okay, it is not rules. I will not say these are rules, regulations. These are certain tricks and tips we should remember in formal communication to make it effective. Right, when we are talking to our friends or family, we are not so much concerned because we are used to that. The language is either comfortable or the people are very known to us. In formal communication, there are two problems. We are not so much friendly to the people to whom we are talking. Sometimes we are making friends in our offices also, but formal का मतलब ही ये है कि it is not we cannot do it as we want. ओके तो जैसे तैसे भी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा कुछ मेंटेन करके करना होता है. सो दैट इज वाई कम्युनिकेशन क्लासेस, दैट इज वाई कम्युनिकेशन कोर्सेज. अदरवाइज कम्युनिकेशन तो बचपन से सीखते हैं, राइट? सो टुडेज क्लास इज बेसिकली, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस अंडरस्टैंड टुडेज क्लास इज ऑन रोल प्लेस. How many of you, again I will ask, is attending role play classes for the first time with in this platform? Because very few are there till now, I can see. Only okay, okay, 2 3 names I can see. Great, fine. uh, Oishani, Pritha, no, I don't think Oishani you are attending for the first time. Yeah, maybe a confusion because I have seen you earlier. Acha, Duti, Pritha, Adrija, so you are attending role play classes for the first time, and many of you are also new to me. Many of you might have attended my classes earlier, but I don't remember. Okay, you can put down the hands. Great. So I may not remember your name, or I may not know you. So whenever you unmute yourself, either you are participating in the role play or for a question or for a feedback. Just if you are new, I'll definitely ask you to introduce yourself in one line so that I also get to know you. Fine. So for the new people who have not yet attended role plays in this platform, in Cognize platform, you might have attended anywhere else, or you might be attending for the first time. There is nothing to worry. A few people will be participating today because to include everyone is not possible. So we will try to do 4 to 5, maybe 3 to 4 topics as per time. एंड कुछ लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बट बाकी लोगों को हम चाहते हैं कि आप भी इंटरैक्ट करो. आई विल, व्हेन वन रोल प्ले विल बी कंप्लीटेड, वी विल डेफिनेटली आस्क फॉर फीडबैक्स एंड ऑल. सो पार्टिसिपेशन interactions will be there. It is not like if you are not participating, you are not interacting. It's not like that. So you are always welcome to ask your questions, unmute, raise your hands, write in the chat box.
you are always welcome to interact, but definitely those who have not attended, for them I am telling, a role play is nothing but a situation is given to you based on your subject, based on nutrition, based on diet. Everything is based on diet and nutrition. So a situation will be given to you which you people might have faced in your daily lives. Many of you are here practicing dietitians, तो आप लोगों ने face किया होगा, related to patient counseling, related to something else. So a situation will be given to you, a role will be given to you that you are a dietitian. Definitely everywhere your role is more or less a dietitian or nutritionist, but the situations will change. ओके तो आप लोगों को एक सिचुएशन दिया जाएगा जहाँ पे दो लोग या फिर समटाइम्स वन पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द रोल प्ले वी हैव डिसाइडेड. सो वी विल do the role plays accordingly, and as it will start you will understand. Those who are doing it for the first time, just don't be tensed. We will try to do it in English and Hindi. हिंदी इसलिए क्योंकि सबको बंगाली समझ में नहीं आएंगे, एंड इंग्लिश इसीलिए क्योंकि हम लोग इंग्लिश को भी डेवलप कर पाएंगे विद दिस practice. Okay, but the thing is that maybe ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग और ड्यूरिंग रियल लाइफ सिचुएशंस हमेशा आपको इंग्लिश में नहीं कन्वर्सेशन करना होता है, बट English is required in many phases of your professional life, and many of you are afraid of the English speaking also. इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि आप इंग्लिश हिंदी में ट्राई करो. जहाँ पे प्रॉब्लम होता है थोड़ा बंगाली यूज कर सकते हो, आई विल ट्रांसलेट इट फॉर अदर्स, बट ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश एंड समवेयर इन हिंदी. ऐसा नहीं कि हिंदी अलाउ किया है तो पूरा हिंदी में ही करो, बिकॉज आई एम नॉट ऑल trying to allow Bengali also. Hindi only I'm allowing so that others will understand. Even when I'm talking in Hindi and English, none of which is my mother tongue. My mother tongue is neither English neither Hindi, so I will also make mistakes in Hindi, right? So definitely don't worry about your mistakes in English and Hindi. I'm there to help you. Your our old students are there to help you. Today it will be coordinated by Debjani and Khushbu, who have been there with Cognize for a long time. They have done classes, they have been associated with different activities. So we have I have chosen today that they will be coordinating the role plays, they will be explaining it to you, they will be choosing the candidates. And if anyone feels like कि मुझे भी ये role play करना था, हम आज नहीं कर पाए, तो please tell your names, all the interested participants. We will have future classes, we will again include you. As you can understand, to include everybody in a single class is not possible. Okay, so without wasting time, Khushbu and Debjani will be explaining the first topic and will be choosing the participants, either two participants or one participant, depending on the role play topic. Okay, so over to you, Debjani and Khushbu. And I will just tell one thing, that after the role play is done, after we will restrict a time of 5 minutes or something like that. अगर उससे पहले खत्म हो जाता है तो ठीक है, but ऐसा भी नहीं कि 2-3 मिनट में खत्म कर दो. 5 minutes time choose किया है, so within 5 minutes we will try to do. If it crosses the time, प्रीथा मुखर्जी কিছু শোনা যাচ্ছে না ম্যাম? Am I audible to others? Yes, ma'am. Yeah, You you are are audible. ma'am, শোনা যাচ্ছে। Maybe her network problem. I'm writing to her. Sure, Oishani, no problem. We will be doing with different people. So interested candidates' name will be noted down as Oishani has told. I'll definitely note your name. We will do with others today. So if anyone whose name is being called and they are feeling like आज नहीं कर पाएंगे तो बोल देना, हम alternative किसी और को choose कर लेंगे. And after one role play is completed, I will ask for your feedbacks. You can raise your hands and tell कि यहाँ पे ऐसा हो सकता था, यहाँ पे ये अच्छा लगा, यहाँ पे थोड़ा हम ऐसे भी कर सकते थे. Because जो role play करेंगे वो अपने perspective से करेंगे, आपका कुछ और perspective हो सकता है. So I just want you people to interact. Fine. So it's not like कि आप role play नहीं करोगे तो interact नहीं करोगे. तो everyone, you have the opportunity to interact. Fine. So it's over to Debjani and Khushbu. You can choose the role play topic. Anybody is facing any problem in understanding, मैं जो बोल रही हूँ अगर उसको बंगाली में बोलना है, हिंदी में बोलना है, सो आप प्लीज मुझे बताना. आपको किसी भी जगह पे कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो यू जस्ट रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट. वी विल रिपीट इट. फाइन. So Debjani and Khushbu, please coordinate the role play. Please tell the first topic and our participants. Yeah. Good evening, all. Good evening, ma'am. Yeah, as ma'am was saying that today is a role play day.
and there are four topics we are selecting. First will be, just a moment. First will be the corporate people on the healthy lifestyle. Okay, and who will participate in that? I was just elaborating a few things. That is, एक छोटा सपोज कीजिए, you are going in a corporate sector as a dietitian or as a health advisor, and you have to give a small crisp lecture on how we can and lead a healthy lifestyle, a better lifestyle. क्योंकि as corporate person are very busy, they didn't maintain a proper diet or plan, or they didn't time to get workout or exercise. So unke liye, how can we manage the healthy lifestyle for them? So yeah, Khushbu, can you pick anyone's name? Yeah, I'll just interrupt here once. No need to raise your hands here because normally क्या होता है ना, why we are not taking the raise hand options is not to discourage you, क्योंकि there are few set of people who are active and who will raise their hands, we know. तो I have told, because मैं भी सबको नहीं जानती हूँ, तो I have told Debjani and Khushbu, try to pick up the names from people who are active and who are not so much speaking in the class. So ऐसा combination करके करो, या फिर जो लोग ज्यादा बात नहीं करते, but जो लोग interested है, जो लोग raise hands अभी कर रहे हो या बाद में भी बोलना चाहते हो, you can definitely interact on it later, and even on next classes अगर आपको लगता है मैम इसी रोल प्ले पे हम participate करेंगे, तो please write to sir in the group. We will definitely consider you also. Okay, that is why we are not taking the raise hand options, because एक selective group of people हो जाता है तब. तो खुशबू and देवजानी try to coordinate like that. Choose the names accordingly. Yes, ma'am. So as Devjani said, the first topic is about for corporate people. You're going to a corporate office where you have to give a lecture of 5 minutes, and you are the dietitian, of course, on healthy lifestyle. So for this one, Sneha, are you available? Sneha. Yes. Yeah. Yeah. Yes. So we'll take this one from you. And if you can, then just on your camera and we can have Yeah, it. Sneha has already switched on the camera. Very nice. Yeah. So before Sneha starts, I will also tell you that Sneha is giving a lecture to a mass of people, right? So after she's giving the lecture, you can act as the audience. You can raise your hands and ask her some questions depending on her topic. जिस topic पे वो बोल रहा है, उसी में you act as corporate people. Don't act as dietitians. तो आप corporate people हो जिनको वो lecture दे रहे हैं. राइट तो आप रेज हैंड करके इंटरैक्ट कर सकते हो, बट नॉट मच, 2 to 3 पीपल विल इंटरैक्ट. ओके, अगर सबको बोलेंगे तो टाइम लग जाएगा. तो फर्स्ट स्नेहा विल गिव द लेक्चर. स्नेहा, आप सोच लो कि आपके सामने कॉर्पोरेट पीपल आर सीटिंग, यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू देम and you are giving a lecture to them the way you want. After your lecture is finished, 2 3 people might ask you some questions. Fine. And don't worry, it is not, we are not judging you on the basis of, we are at all not judging anyone. We are not also considering कि आपको intricate हर चीज का question answer आता है नहीं आता है. It's fine. Okay, so we are here to encourage interaction, communication, speaking. Fine. So don't worry, don't judge yourself, don't judge others. So Sneha, it's over to you. You continue. You start with a greeting and your introduction. Yeah. Hello, everyone. My name is Sneha, and I'm working as a trainee dietitian under Patliputra Multi-Speciality Hospital. Before that, I had worked for 3 years as a marketing executive in corporates. So today, I want to share my views on a very relevant topic, healthy lifestyle and its importance. So, healthy lifestyle means lowering the risk of getting seriously ill diseases or die early. Healthy lifestyle not only means healthy body but also means healthy mind. Nowadays, we often invest a lot of our money on getting different kind of life insurances like health insurance, life insurance, etc., etc., which is a good thing. But most of the times, we forget to invest our small amount of time from our day-to-day lives to work on ourselves, to invest a little amount of time on our own health. So if we can give like
15 to 20 minutes of our daily life into meditation, some basic yoga poses, and some stretching exercises, it will not only help us to lengthen our lifespan, but can also save a lot of our money and time which we are investing in getting different kind of insurances, going to hospitals, getting regular checkups. Where these all things are good, but at the same time, investing on our own health is very important. Investing some amount of time is very important. If we can focus on what we are eating, how much we are eating, and when we are eating, it can solve a lot many bigger problems later on, like lifestyle disorders like hypertension, diabetes, cardiac disorders, cardiac diseases, liver diseases, etc. So I want to say, like, there is a famous idiom called as health is wealth, but we often forgot the real meaning of that. It has a really intense meaning. If we can really focus on our health, it can become our wealth later on. So I think we should start focusing on our health on daily basis by giving at least 15 to 20 minutes on everyday basis to basic exercises, and also focusing on what we are eating on day to day life. That's it. Thank you. Okay, fine. So I'll comment, or we will have the feedbacks later. We will have your comments later. So depending on this topic, anyone would like to ask any questions? Enacting as a corporate person, because many of you are already working in corporate, so आप खुद भी face करते हो. So anyone would like to ask her a question? As a audience, anyone, even Debjani and Khushbu can, or anyone else who wants to ask. Any one question? Khushbu, Shall I you sure, Khushbu. Okay. So thank you so much, ma'am. The lecture was really good, but I have a question in mind. So actually, in the corporate world, starting the day with a breakfast can be possible, but then the mid meals or maybe the lunch, generally we skip that. So what would your suggestion be to be able to focus on that and not miss our meals at least? How can we plan that out? As I have also worked in corporate, and I can completely understand your problem. It is a very relevant problem in corporates because we are very busy while working in the hustle and bustle of our daily lives. It is not possible to get to eat our snacks every 3 hours. Which of course is not possible while working in a corporate or any other field where you are very busy with your work. So I think what we can do is we can may take small snacks, which like healthy snacks that we can eat on while even working. Like munching snacks like roasted peanuts, roasted makhana, these all things, or maybe some peanut chikki or something like that. If we can't even do that, at least take 3 times meal, which is very necessary. Sometimes people do skip their lunch also yeah, in the offices. Sometimes they take their lunch at 4 o'clock, which is not at all healthy. So at least focus on getting 3 times meal every day. Eat healthy and give some focus on like what you are eating at that on those 3 times. Like if you are eating only 3 times, don't eat all the I guess there's some sweetened network issues fruits on. on my Yeah, side, continue. ma'am. No. Sometimes it is getting stuck. Yeah, please continue. Yeah, again. Sneha, can you rejoin once? Am I audible to her? I think her screen is freezing and his Screen connection is is. freezing. Okay. Yeah. Okay, fine. So in the meantime, I'm writing to her. Sneha is in the batch 5 group. ना यहाँ पे ही लिख देते हैं. Okay, let her rejoin or let the problem gets resolved. So
At least she finished off the role play, and then this problem started. So let her rejoin. We will give the feedback on her, how she has said. Apart from this, can anybody have any suggestions on this? If you feel that anything more can be added to this, what she has said, uske alawa agar kuch aur add karna hoga, so if you, any of you have your suggestions, you can give your suggestions. Anyone, uh, any from the, yeah, okay, Priya, great. Please unmute, Priya. Any more We suggestions? can't open video camera. Sure. Okay. Continue. Okay, I think you should pay. Audience should carry some drinks like Fine. sattu Great. drinks, lassi. It's also works. It's Great. also feel full Keep in you the day. hydrated also. I am not Yes. from your field, but from a general point of view, I'm saying keeping yourself hydrated is also very important. Yes. Yes, yes, that's Very good right. suggestion. Okay. Anyone else? Very nice suggestion. Audrija. Audrija, please unmute. Hello, ma'am. Good evening. Yeah. Ma'am, I would like to incorporate some fruits and मतलब थोड़ा सा अगर फ्रूट्स इंकॉर्पोरेट करा जाए डाइट पे तो दैट इज वेरी मच हेल्पफुल क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स और एंड द मेन पार्ट इज एंटीऑक्सीडेंट रहता है तो वो बहुत सही हेल्प करता है तो अगर स्मॉल पोर्शन ऑफ fruits should be incorporate in their diet that they are taking these at mid morning or as And snacks possibly that is then also easy to take. That is easy to carry yes also. Yeah. easy to carry also so Hmm. that is very much helpful for them. Fine. So these are part of the diet tips. Priya said but we can add some. Okay. Sneha, you are back. Sneha, just unmute once. Yes, ma'am. Ma'am, I was just about to add hydration part in the next point, but my network was not Okay. working properly. Fine. So great. So whatever Priya, Sneha, you have said very well said. The positive part I would say is you have a continuous flow. Obviously it's very common to feel nervous whenever we are on any platform talking on anything, but you are on a continuous flow. You have continuously said the whole thing, which is the main part of a lecture. Okay, when we are telling any lecture, if you are taking too much time in between to think, and also, and that will happen initially. Don't others don't feel कि मैम ऐसा बोल रहे कि हम लोग सोच के नहीं बोल सकते. This is a practice platform. You are allowed to do mistakes. You are allowed to think. You are allowed to do anything. So this is a practice, but that is a positive thing. I'm saying the flow was continuous. Obviously, the English is also good. Your English is, you have said in a continuous flow of English. Good points added. I'm not going into very deep, discussion of diet and nutrition. But overall, what I felt as a, maybe if from a corporate point of view also, if I would be a corporate person also, right now I'm not, but I had worked in a corporate also. So from that point of view, you have included very relevant things, very relevant points ki beech mein not only skipping breakfast, even skipping lunch and other parts of the meal are also a part of this corporate story. हम लोग सिर्फ breakfast पे ध्यान देते हैं क्योंकि वो बहुत important है, starting meal of the day, but other meals are also skipped. तो यू हैव वेरी वेल आंसर्ड द क्वेश्चन ऑफ खुशबू ऑल्सो, उसको भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया. अ वेरी पॉजिटिव पार्ट आई वुड से, this is for everyone. When someone is asking a question like Khushbu asked, and she is like connecting to the question, being a part of corporate, I can relate to your question, I can understand, this type of words. Whenever you are doing patient counseling also, this type of sentences are very effective. I can totally understand your problem. Probably a mother is coming to you for counseling, and if by chance you are also a mother, or you have seen, you have a mother at home, आपका sister who is a mother of a small kid, क्योंकि आपके मम्मी को आपने देखा नहीं होगा small kid को manage करते हुए, because you were small at that time. तो आप ऐसा बोल सकते हो, I have also seen my sister managing a small kid, or I myself have a small kid at home. तो ये जो connect करते हैं ना हम, उसी से people feel relieved कि she is understanding my problem. So the way you have answered the question, the starting of the thing was very nice. I can relate to it. I can understand your problems. This is actually empathy. This is not sympathy. Thank you. This is empathy, right? So these things were very good. Obviously, Priya and Audrija have added to very nice points from the diet point of view. What I would like to say from the communication point of view is, when you are giving a lecture somewhere, so our main task is to capture the audience.
एंड कॉर्पोरेट का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, दे आर ऑलरेडी इन अ वेरी टायर्ड, इन अ वेरी हेक्टिक all day work. So your flow was good, but it was like a non-stop without any pause. तो आप जैसे आपने आंसर किया ना बाद में विथ अ स्माइल, विथ अ लिटिल बिट पॉज इन योर फेस, तो जैसे आपने आंसर किया उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ, उसी एक्सप्रेशन के साथ अगर आप पूरा लेक्चर देते तो इट वुड हैव बीन बेटर. Already it was good, it would have been much better. Okay, so this is just a suggestion. So whenever we are giving lectures anywhere, because to a lot of people, तो हम लोग को कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा. Who is the audience in front of me? ठीक है, कि मेरे सामने, दिस इज फॉर द नेक्स्ट रोल प्लेज ऑल्सो. ओके, हु इज द ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी? कॉर्पोरेट पीपल है कि रूरल पीपल है, विलेज से है, कि मेरे सामने एक जन है या 500 पीपल है. अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड द ऑडियंस, उस हिसाब से आपको आपका लेक्चर या फिर आपका स्पीच स्टार्ट करना है. राइट, सो दिस इज अ लेक्चर यू आर गिविंग टू कॉर्पोरेट पीपल जो ऐसे ही बहुत मुरझाए हुए, टायर्ड एंड ऐसा फील के साथ बैठे होंगे. तो start with a nice greeting, start with a smile, if possible add a sense of humor. Okay, or add start with a question, which I always suggest. Okay, how many of you are facing this problem of diet or something? कुछ एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करो, कुछ एक लाइन के साथ स्टार्ट करो, एक अच्छा सा एनर्जेटिक ग्रीटिंग के साथ स्टार्ट करो. आई नो ऑल ऑफ यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड, but okay, we are here to discuss very interesting things and very important things. Aisa kuch energetic, which I want to say is you do start with a smile, with an energetic face. That is one thing. And whenever you are talking at a time, long एक speech दे रहे हो, take pauses in between. These are two suggestions for long lectures. क्योंकि जब conversation होगा ना one to one, तब वैसे ही pause लेते हैं हम लोग. बट जब लेक्चर देते हैं तो हम नर्वसनेस की वजह से क्या होता है, पॉज लेना भूल जाते हैं. दिस इज वेरी कॉमन, बिकॉज इफ यू टेक द पॉज ना, आप खुद भी कम नर्वस फील करोगे. लाइक व्हेन यू आर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन एक्सरसाइज, तो आप थोड़ा थोड़ा पॉज लेते हो ना. कभी कभी स्लो वॉक करते हो, कभी फास्ट वॉक करते हो, कभी पॉज लेते हो. अगर एक ही स्पीड में बहुत देर तक आप वॉक करोगे, यू विल फील टायर्ड. तो यही होता है स्पीकिंग के टाइम पे भी. स्टार्टिंग में तो आप अच्छा फ्लो के एनर्जी के साथ बात करना शुरू कर दोगे, बट इफ यू डोंट टेक पॉजेज इन बिटवीन ना, बाद में आपका एनर्जी खुद ही ड्रॉप हो जाएगा. Fine. So it's start with the energy, take pauses, start with some question whenever you are giving lecture somewhere. Okay, so I know you people have a very busy lifestyle, and to all the ladies, to all the women here, I guess you have to handle your home and you have to handle the office, so it must be a very tough job, isn't it? Aisa bol ke up, and people will be raising their hands, people will be saying yes. So it is called involving the audience. How do we involve the audience? With a good greeting, with a question, with a nice line, with a nice introductory line. So these are just some suggestions. Otherwise, very well done, Sneha, very well done, being the Thank first, you. okay, being the first person to do the role play today. And I hope the suggestions will be helpful not only for you, for others also. Do remember this, do remember the audience every time. इसके लिए हम बोल Definitely, रहे ma'am. हैं. People हैं Actually, तो ma'am, थोड़ा- I was recollecting some of the points I initially. understand, I So understand. I was thinking if I will not forget the points. So that's why I'm speaking Happens. It non-stop. will happen with me also. When we Yeah. do something na, suddenly random in an unknown situation, so वो recalling वाला part चलता है. ओके, सो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि स्टार्टिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप रोल प्ले कर रहे हो. जब आपके सामने बहुत लोग बैठे होंगे ना, आप अचानक से इतना कुछ बोलना स्टार्ट कर दोगे, दे विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट. Isn't it? आपको पता है, आपका नॉलेज है, यहाँ पे जो लोग हैं वो आपके से है, डाइटिशियंस है, बट जिसके लिए आप सच में बोलोगे अगर कॉर्पोरेट में जाकर, तो उन लोगों को तो पता नहीं है, तो दे विल नॉट बी एबल टू कैप्चर कि क्या बोल रहे हैं. तो स्टार्टिंग में एक नॉर्मल लाइन बोलो. ओके, जैसा कि आप सब कैसे मैनेज कर लेते हो होम एंड ऑफिस टुगेदर, एंड टू ऑल द मेल पीपल, मेल फीमेल जो भी है, कुछ ऐसा लाइन बोलो ताकि वो कनेक्ट करे. टेक अ पॉज, गिव अ स्माइल, अ नाइस ग्रीटिंग, देन यू स्टार्ट टू टेल कि these are the problems you are facing in our everyday corporate life, and I'm here to help you with some easy tips, with some time saving tips, which will also help you to keep healthy, and it will not take much time also, so that people will connect.
यू हैव गिवन वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, बट अगर शुरू में इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होता है ना, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों को डाइट का नॉलेज इतना होता नहीं जितना मेरा हो गया है आप लोगों के साथ रह के, बट उन लोगों को नहीं होता है, राइट? सो दिस इज ओनली वन टिप, बट वेरी वेल डन स्नेहा, वेरी वेल डन. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Any more questions, or we will move on to the next role play? Okay, fine. So yes, Debjani or Khushbu, introduce the next role play. Yes, ma'am. So the next topic for us is actually this one will involve two people. Okay, so this one is that a mother has come to a dietitian, and the mother is addressing different problems that the child is facing, like eating problems. The child is having immunity problems because the child is not eating properly. That is the reason कि immunity भी low हो गया है. Now the dietitian here, the role of the dietitian will be to suggest some healthy lifestyle and some healthy diet, how to make the food attractive so the child is having that food. These will be some of the things that the dietitian has to say. So here we'll need two people, two volunteers, and Devjani will select them for us. So Yeah. So first role is for dietitian. So Kajal, are you there? Yes. Yes. So will you be part for the dietitian? Okay, I will try. You Yes. can switch on the Yeah, video. switch on the video. And Dutti, are you there? I'm here. Yes. So Great. uh, you will be play the role of the mother. Okay. So please switch on your audio and video. So yeah, and we can just start the role play. Yeah. Oh, Okay. it's a very, very Who is the quite young mother? mother. Duti is the mother, Okay. and Kajal Very is the dietitian. okay. She's a very young mother. A very young mother. Yeah, very sweet and young mother. Great, she is great. the Santur mom. No, no, not like that. Right. नहीं संतूर नहीं है, सच में यंग मॉम है. संतूर वाला नहीं है. But nice, nice, nice. Thank you for Debjani and Khushbu for this relaxing attitude. Okay, that is very nice. क्योंकि वो बहुत उतरा हुआ फेस था जब दूती ने कैमरा ऑन किया. Now I can see. No, ma'am, not like that. Yeah. Okay, fine, fine. So yes, I would like to say one thing before you start, क्योंकि जो patient है, मदर है, कुछ भी है, तो पेशेंट के पास इंडिपेंडेंस है कि वो इरेलीवेंट रेलिवेंट कैसा भी सवाल पूछे, बट काजल यू हैव टू हैंडल दोज विथ इंटेलिजेंस, विथ ट्रिक्स, क्योंकि यू आर अ डाइटिशियन. क्योंकि दूती यू फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो you have to just remove it Okay. from your head. So you are just a mother of a child who is very concerned about her child. तो आप वो कुछ भी सवाल पूछे, that is fine, that is granted, but you have to handle it. Okay, so let us see the role play, and I would really like others to give your feedbacks, give your opinions, later on interact. Yeah, thank you. Please start. Okay, ma'am. Okay. Good So, evening. good evening, ma'am. So today, my child is really very getting facing problem for the food. So he has also immunity problem. He didn't concern about his food. So I tried my best to give him fruits and vegetables also, but he didn't want to eat them. So how can I concern about this him to him that it's very good for him, very healthy for him? Yes. So, ma'am, firstly, I would like to ask about his daily routine, what he does all the day, and what type of food he take. So I will comfortable with further information. Okay, my he has a very low immunity power, so he catch cold and cough easily. So that's why he's facing really very strong type of fever. So that's why he lost his weight also. So I just wanted to know that which type of diet is good for him after that. Okay.
Firstly, he eats all type of foods, or he's vegetable or not, vegetarian or non-vegetarian. No, he eat all types of foods, but he just don't eat eggs also. It's not required for him. He had What allergy with eggs. Eggs. He had egg? allergy with eggs. Eggs. Okay. For immunity boosting, try to give him some fruits and vegetables. Give him attractive. Give him foods making it attractive. So he like to have it, or make uh, Rambo type foods, like use colorful vegetables and fruits, and use nuts, and these fruits, vegetables, and nuts give minerals and vitamins, antioxidants, which help to boost his immunity. So try to give these type of foods, mainly like yogurt, nuts, carrots, beans, oranges, this type, and it will help him to boost his energy, and introduce variety of fruits and vegetable in his daily diet, so it will help him. Can I give him dark chocolate or chocolate types of things that he likes chocolate? That's why I'm asking you. Is it good No, for him? no, giving so don't give chocolates more. Give him sometimes in 1 or 2 days in a week. That मतलब Okay. आप उसको कभी कभी दो, उसको उस चीज का आदत मत होने दो। तो और आप उसको चॉकलेट के बजाय आप उसको अच्छे अच्छे डिशेस घर पे बना के ट्राई करो, उसको खिलाओ, जिससे और जब वो डिशेस कलरफुल होंगे, शेप्स उसके अलग अलग होंगे और अट्रैक्टिव दिखेंगे, तो वो अच्छे से उसको खाएगा। Okay. And can I give him milk every day at the night? Can I give him a glass of milk? Is it good for him? Because Yes, milk you has can. everything, so that's why I just give him one glass of milk every night. Yes, you can give. Okay. And if you suggest me any vitamin for him as a supplement or anything. Supplements, now give him only fruits and vegetables. If there is many deficiency more, then we can go for supplements. If we balance them by the diet, then we don't have to go to the supplement. Okay. Ma'am, anything that you just tell me that I have to change about him, his diet, his foods, anything? Give him more homemade foods. Don't uh, uh, don't give packaged foods or beverage. Don't give that. और घर पे बना हुआ जो भी खाना है अच्छे से बना के, बाहर के पैकेट फूड और जो एक्स्ट्रा सॉल्टी और एक्स्ट्रा फैटी, ये फ्राइड फूड, ये सब बहुत कभी कदार आप दे सकते हो, बच्चे जिद करते हैं, लेकिन हम एक उनका आदत मत लगाना। But अगर बच्चा ना सुने because he is very irritating after that. अगर मैं उसको ना दूं ये चीजें तो बहुत इरिटेट करता है, रोने लग जाता है, सो तब क्या कर सकती हूँ मैं इसके बारे में? आप उसको अच्छे से समझाओ पोलाइटली। आप उस पर गुस्सा भी मत करो कि वो और भी बदमाशी करे। पोलाइटली समझाओ, एक टाइम दे दो आप, पर उसे समझाओ कि दिस इज बैड फॉर यू। और उसको आप जैसे अगर आप उसको इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव फूड्स बना के दोगे, तो वो उधर की तरफ ज्यादा जाएगा। तो हो सके वो बाहर की चीज को उतना दिमाग में ना रखे। Okay. Okay, thank you for this. Okay, fine, fine, fine. Well tried, both of you. Well done. This is, mostly most of you are doing it for the first time. So I would say the participation is very nice by both of you.
The interaction was also very casual, very nice, jaisa hota hai normally. And Duti, being the young mother, played very very well done. All the concerns that comes to the, and one thing I just missed, Duti, you started with, I was just getting a call that time, like what was the main problem? Immunity related, right? Yes, yes, ma'am. Okay, so the child is having some immunity problems, and for that the diet consultation. Okay, fine, fine, fine. Later I understood though. All the concerns she has tried to give. Maybe from wherever you have got the experience from your field or whatever, but very relevant questions, I would say. And Kajal has also answered it well. So overall, the whole thing was very nice. It's a very nice interactions. Before I give any feedbacks or I say anything, I will like to ask others if anything you feel, क्योंकि child के mother के तरफ से तो it's fine, whatever questions she can have, and she was having from the dietitian's point of view, anything more she needs to add, good, bad, whatever feedbacks you want to say. Yeah, Debjani. Yes, it's a very good attempt, guys. Well done. It's very good. But I have a question for the dietitian, ma'am. That अगर कलरफुल चीजें you are suggesting कि कलरफुल बनाए जो उसको पसंद है खाने की, तो कैन यू गिव सॉर्ट ऑफ डिशेस जो मैं उनको बना के दे सकती हूँ, जो उनको ट्रैक कर सकते हैं? अगर कोई छोटे मोटे रेसिपीज या बोल सकते हो आपके, ये पर्टिकुलरली ये प्रिपरेशन या ये प्रिपरेशन. अदरवाइज मदर्स आर नॉट दैट मच ऑफ इन्वॉल्विंग दोज फूड्स, मतलब वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे ना. तो अगर आप वो थोड़ा बता पाए कि क्या क्या खाना हम उनको दे सकते हैं कलरफुल फॉर्मेशन पे या इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन पे. हम लोग जैसे Like, हम लोग जैसे फ्रूट सैलेड्स, जैसे कि हम लोग फ्रूट सैलेड में पपाया से कुछ स्टार शेप बना दिए, या फिर अलग से ऑरेंज लेके एक सर्कल बना दिए, किसी और फ्रूट से कुछ अलग अलग शेप बना के फ्लावर बना के उसके सामने प्रेजेंट करे तो वो अच्छे से ले सकेगा. अगर हम पास्ता बना रहे तो उसमें अलग अलग ग्रीन वेजिटेबल्स है, और जैसे कैप्सिकम्स आते हैं अलग अलग कलर के, वो डाल दो, और इस तरह से वो भी कलरफुल हो जाएगा, जो कि बच्चे को और अच्छे भी लगेगा पास्ता है खाने में. और इस तरह करके स्मूदी दे सकते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग नट्स को यूज कर सकते हैं और बेरीज, और उसको हल्का चॉकलेटी बना सकते हैं घर पे ही. तो ये सब उसके लिए कलरफुल भी रहेगा और उसको अच्छा भी लगेगा. ओके, फ्रूट सो शी इज केक सेइंग बना कि सकते हैं. ऑलरेडी जैसे पास्ता पसंद होता है बच्चों को, अगर पसंद है आपके बच्चों को, तो उसमें थोड़ा हेल्दी ऑप्शंस ऐड कर दो, बिकॉज ओनली पास्ता itself इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन. तो यूजिंग पास्ता एंड विद सम हेल्दी ऑप्शंस, या फिर फ्रूट्स के साथ डिजाइन्स. ओके ओके, सो द क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बाय देवजानी, एंड ओके, वेल आंसर्ड. Kajal. Purbasha, can you unmute? Purbasha, you had raised hand now or before? Acha, pehle Yes, ma'am. okay, sure. Yes, ma'am. Basically, first thing I think the age of the child, এটা জিজ্ঞেস করাটা ভীষণ দরকার ছিল, বিকজ ডিফারেন্ট এজের ডিফারেন্ট গাইডলাইন হয়, তো সেটা আমার একটু বলার ছিল। Not only আর that, a few more questions had to be asked in the beginning. I didn't give my feedback before, but I agree with Purbasha, Kajal. Some more, see, Duti is a very good patient क्योंकि वो information खुद से दे रहा है. हर patient ऐसा नहीं देता है. तो आपको कुछ डाइट देने के लिए ना, फूड हैबिट्स या फिर दिस थिंग, होल डे में क्या लेता है बच्चा सुबह में, शाम, बिकॉज शी और ही हैव अ फीडिंग प्रॉब्लम और ईटिंग प्रॉब्लम. दैट्स मीन ही डिड नॉट टेक द enough food. Maybe she is less than 2 years or 1 years. उसका हैबिट ही नहीं हुआ उसको खाने का, वो ज्यादातर ब्रेस्ट मिल्क खाते हैं शायद. ये सब इंफॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि लेना चाहिए था. Kajal asked is, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो Duti told us no, he eats all types of foods. Now एक all types of food में भी थोड़ा controversy रह जाता है. Right. What is the food habit, right? So that Because, is अगर बच्चा सब कुछ थोड़ा बहुत लेता तो वो उसका वेट और उसका इम्यूनिटी इतना लो शायद नहीं होता, अगर उसका कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो Right, वो right.
हाँ, और उसको मतलब वो जो बोल रहे थे क्या क्या देना चाहिए उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। अगर छोटा बच्चा हो तो उसको किस तरह का कंसिस्टेंसी देना चाहिए। पहले हम लोग अगर सॉलिड फूड देंगे तो बच्चे नहीं लेंगे, वो फिर उसको वो स्पीट आउट और मतलब मुंह से बाहर निकल देगा, तो उसको पहले सेमी सॉलिड से स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक प्यूरी फॉर्म। हाँ, राइट। देन उसको सॉफ्ट फूड में कन्वर्ट करने के माने करना है। फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे उसको सॉलिड फूड में करना है, तो उसका फूड टेक्सचर। देन हम लोग उसको बच्चे जब अगर एक साल का होगा तो उसको हम लोग सॉफ्ट वेजेस और बॉइल्ड वेजेस दे सकते हैं, जो खुद से उठा सकते हैं। वहां पर जब टीथिंग होते हैं बच्चे के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको टीथिंग में भी हेल्प करेगा, उसको च्यूइंग में भी हेल्प करेगा। ये जो छोटा छोटा पॉइंट बहुत सारे हैं, तो वही मैंने थोड़ा इंक्लूड करना चाह रही Okay, okay, okay. Very well points. I guess Kajal, you also agree with her. Yeah, उसका जो nice. एनवायरमेंट है ना, जो वो बच्चे जिसको ईटिंग प्रॉब्लम है, उसका एनवायरमेंट भी बहुत सारे बच्चे अभी उसको कार्टून दिखा के, फोन में दिखा के, तो Habits. उसमें भी ध्यान ध्यान चला जाता है बच्चे का। जो फीडिंग हैबिट वो नहीं होता है, तो हम लोग बेटर बच्चे को कुछ खिलाना, टॉयज दे सकते हैं, उसको कुछ काम में इन्वॉल्व करके उसको हम लोग खिला सकते हैं, उसको एक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो उसको जो भूख, मतलब उसको एक्टिविटी बढ़ने से उसका भूख भी ज्यादा लगेगा। ये एनवायरमेंट बच्चे के साथ कोई स्टोरी टेलिंग करके ये भी बोल सकते थे। Okay, okay. So overall, what Purvasha wants to say is to know about his or her food habits, age. तो पहले जितना हो सके information लेना चाहिए, which is we call probing and questioning and taking all the informations you need. तब काजल जो आप बोल रहे हो ना, वही चीज और भी अच्छे से बोल पाओगे. You have already given very good suggestions, very relevant suggestions you have given. But when you do the questioning, when you do the probing, knowing the basic things before you actually give the suggestions. So this is, see, I'm not going to talk on the diet tips which Purvasha and others are already giving. So I will give my feedback later on. I'll just take two more suggestions from Oishani and Charnak, and then we move on to the next role play. In short, Oishani, if you can give your suggestions, feedback, whatever it is. Now, ma'am, there is no suggestion, ma'am. There is a question. Sure. That sometimes we see that some working mothers can't cook all types of colorful food for their babies or Right. child. So, in this point, uh, these working mother, how they overcome this problem? Right. So any answers for this? Because this is a core dietitian question. Okay. And this is a very relevant question. Time nahi hota hai working mothers ke paas. Because it's a problem. Because Some you are mothers are insisting working. yeah, right. You are insisting on कि health drinks की तरफ ना जाकर, which is a very good suggestion itself, कि ये घर पे बनाया हुआ homemade food दे सके. तो इसमें working अगर है तो थोड़ा बहुत इसके लिए क्या कैसे कलरफुल फूड हम इंक्लूड कर सकते हैं? राइट. ओके, फाइन. मैम कोई तो रहेगा बच्चे के साथ, सॉरी, पर ये खुशबू दी से पूछेंगे मैम, इसका नहीं पता, आप एक बार खुशबू दी से पूछें. Fine. Okay, I'll take the answer from Khushbu. Before that, I'll just go to Chan. Acha, okay. Khushbu, you first. Purvasha, you want to answer this? यस मैम, ये मेरे साथ रोज होता है कि मैं भी वर्किंग हूँ, तो हम लोग जो करते हैं इजीली टाइम कम लगते हैं, हाई प्रोटीन ज्यादा होता है, ऐसे कुछ बना के, जैसे चीला बना के दे सकते हो। उस बच्चे को एक से प्रॉब्लम है, আমি জেনারেলি বলছি, তো এগ বা হচ্ছে কি বলে ওটাকে, দুধ, এগ, ভেজিটেবলস আর কি বলে আটা, এটা ইউজ করে আমরা খুব much time to cook, যেটা আমিও আমার যেটা পার্সোনালি মনে হচ্ছে, which Oishan is asking. Kajal already said fruit salad kind of something, and that doesn't take time to cook. तो Kajal, you can answer that इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है. जिसको पकाने में ज्यादा टाइम लग जाता है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है for working mothers. So do some things which is not taking so much time to cook, something boiled yet tasty, something like fruit salads kind of. This is my suggestion. Please don't take it like आप लोग को और ज्यादा पता होगा. Making some shakes or something which is very easily made. अगर ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है तो शायद आप लोग ड्रिंक्स या हेल्थ ड्रिंक सजेस्ट करते हो, राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू मच इनटू इंट्रिकेट्स ऑफ डाइट, बट द क्वेश्चन वाज रेलेवेंट.
we do accept that the question was there. मैम मैं एक बात बोलना चाहती हूँ Sure, यहाँ, sure, sure. सैंडविच भी तो दे सकते हैं हम Sure, यहाँ। sandwich दे सकते हैं। अगर Yeah. मतलब अगर पोटैटो या चिकन का स्टफिंग होके दे तो वो खाएंगे भी, इंटरेस्टिंग भी होगा, वो पकाने में ज्यादा टाइम ही नहीं लगता। और वो जो पूर्वाशा दी वाज सेइंग दैट चिल्ला या गोला रोटी फॉर्मेशन पे, Yeah, right. ठीक है, some smileys or draw there by sauce or something, so we can provide those things also। या स्मूदी दे सकते हैं, वो खा लेंगे, वो Can I give मिल्क शेक dalia, या shobji Yes, dalia, yes, yes, yes. Vegetables dalia. She's a vegetables dalia? हाँ, yes. यहाँ पे sure, sure. सबसे But relevant answer there is है also a problem, I think, because जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो तो मेनली अपनी माँ के पास ही खाना खाते हैं ना। अगर वर्किंग वोमेन होते हैं तो वो नहीं रह सकते उनके पास, तो तब क्या होता है, जो बच्चे हैं वो खाना नहीं खाते, खाना नहीं मैं खाता। माँ के बिना नहीं खाऊंगा, ऐसे ही करते हैं, या खाना फिर ठीक जो से नहीं भी खाते, तो वो भी हाउस बहुत। हेल्प है जो है उतना ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर हमेशा। या दैट हाँ इज ऑल्सो one of the things that we can tell is to prepare for things beforehand. Like subha mein time nahi hai, lekin you can prepare for different kind of mixtures or some things that can be stored and then it can be used in the morning. So that is one of the things that generally working women do. So that is the answer to the question, that preparing beforehand taki hurry na ho, and also getting the child into the habit of eating himself. भले वो थोड़ा सा बर्बाद करे, give the food to them on a plate, make them Yes. sit on a high chair or maybe on the dining table on the floor. बर्बाद करे करने दो, but बर्बाद करेंगे। keep them, राइट राइट, दिस इज अ वेरी नाइस थिंग। आई हैव आल्सो सीन प्रैक्टिकली कि वो उसको बर्बाद करने दो, थोड़ा वो इधर उधर फेंकेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। वो हमेशा हम लोग सोचते कि वो हम लोग की तरह बिहेव करेगा, isn't it? A child cannot behave like an adult. Very well said, Khushbu. Yeah. they learn the textures and all from there. So that is also very important. Right. उसका जो ওটাই বলছিলাম যে caretaker মানে will, বয়েলড ভেজেস যদি আমরা দিই তাহলে আমরা ওটা কি ওদের কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট, ফাইন মোটর ডেভেলপমেন্টটাও হয়, ওরা চিউ করে, নিজে হাতে তুলে খায়, তাতে ওদের মানে আবার ওদিকে ওদের ইমিউনিটিটাও বুস্ট আপ হয়। তো আমরা সেগুলো ওই ছোট ছোট জিনিসগুলো মানে 1 স্পুন আমরা বাদাম দিতে পারি, যদি যাদের টিথিং হয়ে গেছে সেখানে দিতে পারি। বা খুব ইজি যেটা হয় যে প্রোটিন কাটলেট গুলো স্ম্যাশ করে ঘুরিয়ে নিলে সোয়া বা আলু বা হচ্ছে কি বলে গোটা মুগ, এগুলো সময় লাগে না, শুধু মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিয়ে ওদেরকে কাটলেট করে দিলে ওরা খুব, ওটা হাই প্রোটিনও হয়, বা পনির ইউজ করেও করা যায়, এগুলো করা যেতে পারে বেবির জন্য। Thank you. So we have got suggestions. There are a lot more suggestions of this food. So what we need to understand, today's class is not on diet charts or something, but obviously agar diet counseling hai to diet involved hoga, definitely hoga. So the main thing to learn from here is like when we are doing counseling, we have to handle, my job here in communication classes is you should handle the questions which is already said by your friends कि खुशबू या सॉरी काजल don't get nervous कि बोल रहा है working mothers तो क्या होगा, अब क्या होगा। You have already told very easy options, तो आपको उसी के ऊपर जोर देना है, right? आपने फ्रूट सैलड बोला था या पास्ता बोला था, ज्यादा टाइम नहीं लगता है पास्ता विद वेजिटेबल्स या फ्रूट सैलड में, राइट? सो यू गिव फोर्स ऑन व्हाट यू हैव सेड। आप नर्वस मत हो जाओ, अगर आप नर्वस हो जाओगे द पेशेंट विल थिंक दैट आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, फाइन। सो यू हैव ऑलरेडी गिवन द थिंग्स, बट बाद में क्या होता है, पेशेंट ऐसा मिलेगा जो आपको नर्वस कर देगा, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, isn't it all these things? So even corporate mothers have some options in hand, isn't it? अगर वो बोलेंगे कि नहीं कुछ भी हम घर पे नहीं कर सकते, तब तो आपको बोलना होगा see now you can, if you give everything from outside and only depend on supplements, so definitely you cannot expect your child to have good immunity and all. I will give you easier options. हाफ एन आवर पकाने में लगेगा, उसके जगह पे हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं जो आप 10-15 मिनट्स में बना के दे सकते हो ब्रेकफास्ट में, isn't it? So that at least you have to do अगर आपके चाइल्ड को अच्छे से आपको इम्यूनिटी डेवलप करना है। सो इन दिस वे दिस इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हैंडल द क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल कम, इरिटेटेड पेशेंट्स विल कम। ये तो बहुत स्वीट पेशेंट था जो आपको खुद बहुत हेल्प कर रहा था, दूती वाज अ वेरी स्वीट मदर। हमेशा आता इरिटेटेड मदर्स बहुत आएंगे क्योंकि वो खुद इरिटेट हो जाते हैं बच्चों को लेकर, कॉर्पोरेट लाइफ, बच्चे,
तो उनके इरिटेशन को समझ के आपको समझाना है. डोंट गेट नर्वस. ओके, but very well done, Duti and Kajal. Okay, so before moving on to the next role play, I'll just like to say, Charnak, you have to say something on this particular role play. Yes, ma'am. Fine, please say. Ma'am, I have a question. Uh, जो चे now supplementary जो food है, Mm-hmm. तो can I give to the patient? Yes, जो like obviously ये आप लोग ज्यादा जानते होंगे, isn't it? Supplement cannot replace everything. It is a part of like कुछ मिसिंग हो रहा है, जैसा काजल ने बोला था, अगर डाइट से पूरा वो नहीं हो रहा है तो उस जगह में हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज एंड ऑल. देयर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स, बट ऐसा नहीं सप्लीमेंट्स के ऊपर पूरा भरोसा कर ले. सी, आई एम नॉट हियर टू कमेंट ऑन द डाइट पार्ट. ओके, सो दैट योर फ्रेंड्स, एनीवन आंसर ऑन दिस, giving supplements, positive or negative sides of supplements, dena chahiye nahi dena chahiye? Anyone on this who have not yet spoken? Anyone like this? Ketaki Nag, I'm just randomly calling. Can you unmute? Yes, ma'am. Okay, तो your friend Chanak has asked a question कि supplements बच्चों को दे सकते नहीं दे सकते? Yes, no में आंसर तो नहीं हो सकता इसका. What would you say on this? एक्चुअली जो है उसका अकॉर्डिंग वेट की मतलब अकॉर्डिंग एज की तरह उसका वेट क्या कमी है कि ज्यादा है, ये देखने के बाद हम Right. लोग बोल सकते हैं क्या सप्लीमेंट देना जरूरी है कि नहीं. Right, right. ये एक बात है. और दूसरा है कि जो फूड से ही वो जो अवेलेबल है जो होता है तो उसका सप्लीमेंट जरूरी नहीं होता है. जो Right. फूड से नहीं आता है मतलब ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम जो बोला और the child is not हाँ eating everything. नॉट इसमें तो हाँ हमने देखा कि वो बोल रहा है वो खाता है सब कुछ, सब राइट? कुछ तो खाता बस उसको थोड़ा हाँ टाइम देना है. इस जगह में हाँ सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं देना है मेरे ख्याल से. हाँ हाँ ओके, so this is possible. This is a very basic question, Chanak. I guess you will know this कि आपको एज देखना है, आपको डाइट हैबिट्स देखना है, उसका क्या मिसिंग हो रहा है, सच में बहुत गैप हो रहा है क्या डाइट में, उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर सकते हो. अगर जरूरी नहीं है तो बेकार में क्यों इंक्लूड करें, राइट? सप्लीमेंट्स क्यों है इस जमाने में, सप्लीमेंट्स इतना क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, टाइम प्रॉब्लम, डाइट से सब कुछ नहीं मिल रहा है, प्योर फूड्स नहीं मिल रहा है, राइट? यस टीना. यस Ma'am, can I say anything? sure. Yeah, ma'am, I think nowadays most of the child have eating problem, and Right. whatever they eat, carbs and protein they got, They get but from the food, yeah, but the other yeah, things they are but not getting. other vitamins and minerals, there is a lack of vitamins and minerals. So I think supplement is not bad, and I Obviously think not. supplement is That good. is why I said na yes no में आंसर नहीं हो सकता Yeah, इसका. supplement is good. Actually, it's easy to make also for the mothers. And yeah, from a supplement, they get a whole nutrition. Okay. So I think for child between age 2 to 10 years at least, supplement is best. That you have to suggest कितना देना है, कितना amount में देना है. It's may vary and it's dependent, but I think supplement is It's good. not bad, obviously. Right. Okay. So we move on to the next role play. We will have some question answers. Keep it in your mind. अगर time मिलता है last में एक और role play करा लेते हैं उसके बाद. So this is very interesting. Role play से भी ज्यादा role play के साथ associated जो भी interactions होता है वो बहुत interesting है. This is very fruitful interactions. Okay, and everybody is trying to make it in English and Hindi. That is also very good. Thank you, Debjani. Please go on to the next role play. If we have time, we will move on to Q&A later on. So we already had a corporate. We already had a mother and child. Let us see the next one. Okay, thank you, Kajal. Thank you, Duti, for enriching about this topic. So the third one is about anemia, the topic I was elaborating, and Khushbu will pick the name of candidate. Okay, so the situation is
there is a community awareness camp or something. Dietitian or the health advisor go there, and they have to aware about the mother and the teen girls about anemia and how they can aware of that anemia. तो उसके ऊपर you have to say something कि कैसे we can प्रिवेंट दैट डिसऑर्डर और क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं उसके लिए. सो दिस इज द टॉपिक. सो खुशबू, कैन यू जस्ट पिक? Yes. So for this one, we need only one volunteer. So Preetha, are you there? Preetha Mukherjee. Yes, Pritha. Okay. Yes. Sir. Can you do that? Okay. So before Pritha is starting, I'll just like to ask. This is also mass awareness, like the first one. And is it for a rural area or semi-urban area? या ऐसा कुछ है कि mixed audience? It's for a rural area or a semi urban area. This is the region. Fine. So Pritha, you have to give the lecture keeping in mind जो पहले था वो corporate था. Okay, very highly educated and sometimes very over smart people are also there. तो यहाँ पे कैसा audience है उस हिसाब से you have to give the lecture. Okay, as I told in the beginning. So you give it in your own way. Later on we will have the interactions. So relax and give it. There is no interactions in between. आप अपना lecture दे दो. उसके बाद अगर कोई audience होकर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. Fine. Okay. So Pritha, over to you. Hello, I'm Pritha. Recently, I have completed my master's and looking for an internship opportunity. Now, today my topic is community awareness in rural or semi-urban area about anemia prevention. We all know that nowadays anemia is a big problem, especially in rural or semi-urban area, because they don't get the proper foods, or rather we can say that they don't have proper knowledge about the disease like anemias. So, but as a nutrition, Just 1 minute, Preetha. I'm just interrupting in between. Don't give it in a indirect speech like they don't get this. आपके सामने है, okay, आपके सामने बैठे हैं लोग, तो आप वो सोचकर जैसा फर्स्ट वन ने दिया था. कॉर्पोरेट पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट, जैसे स्नेहा ने दिया था, राइट? सो यू गिव कि आप लोग जानते हो कि अभी ऐसा, यू ऑल नो दैट एनीमिया इज अ प्रॉब्लम, आई नो हाउ मेनी ऑफ यू आर सफरिंग. तो ऐसा आपके सामने लोग हैं, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में मत दो. यू विजुअलाइज द सिचुएशन दैट ऑडियंस जो है थोड़ा सा विलेज या मतलब विलेज या अर्बन मिक्स्ड एरिया से है, बहुत ज्यादा एडुकेटेड नहीं है, तो उनको आप समझा रहे हो कि इसको कैसे डील कर सकते हैं एनीमिया को, राइट? सो योर वे ऑफ टॉकिंग विल बी लाइक दैट कि डायरेक्टली आप उनको समझा रहे हो. यू फॉरगेट अबाउट द क्लास. राइट नाउ यू आर इनटू अ रोल वेयर पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, प्लीज कंटिन्यू. yes, so as a nutritionist or as a dietitian, we all have a responsibility to avoid people that the role of food for preventing diseases like anemia or any diseases. So if we suppose go to rural or urban area to avoid people, firstly we can say that you people get egg, fish, soybean, whole grains instead of having fast foods. And secondly, we can focus on consumption of green leafy vegetables and egg, fish, which are rich in iron and folic acids. You can, especially for pregnant and lactating mothers, you can have bioavailable iron, meats, vitamin B12 consumption. You can have like curds, eggs need to be encouraged. We can say that you can have meats, curds, eggs. Secondly, we for lactating mothers or pregnant mothers, we can encourage them to go to antenatal clinics, different Anganwadi centers, about to know the prevalence of anemia and get to know about what are the causes and prevalent nature. Thirdly, I can say that you people can have vitamin C rich foods such as oranges, guava, amla, whatever you can have. And I will say that you don't. I will say that discourage people that consumption of tea immediately after meal, because as we know that tannin affects
iron absorption. So don't so people, I will tell the people not to take tea after meal. I will encourage people to consumption of fortified salts, that is table salt, we all know. So I can say this much to people for our anemia. Mm, so, as a nutritionist or dietitian, if we educate the people to what to eat, what not to eat, and we will surely prevent anemia, and we can cure. We know that can't cure anemia, but we can try to prevent anemia through different awareness camps or programs for different age groups, because we all know that different age groups like children's under 6 months, school going children, adolescents, boys and girls, pregnant mothers, lactating mothers, different age groups are suffering anemias. So, if we can arrange some camps and awareness program, it will be very beneficial. Okay, okay. You want to add anything more? Sorry, That, ma'am. yeah, you want to add anything more, or yeah, it's done. Fine, It's fine. done. Well done. So as far as I can remember, Pritha, you are probably first attending a role play in my class, right? So this is the first time. So I do encourage, you have done a very good job. Uh, Told very nice and relevant things, told things which are very important. Timing of taking the food, ki किसके साथ क्या नहीं लेना चाहिए, वो चीजें, and uh, giving focus on the major. Yeah, yeah, very well done. I also feel you are getting definitely good reactions from your friends. So before I give any kind of, just one thing, Pritha, whenever we are doing a role play, as I was telling in the beginning, कि आप ऐसे बोलो कि आप उन लोगों को बोल रहे हो. You don't need to tell we can tell them, ऐसा नहीं बोलना है, बस direct speech में बोलना है. That is the only one thing. Otherwise, very important things you have mentioned in a random, because इतना कुछ याद नहीं होता है. सो रैंडमली जितना हो सके आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन किया, क्या क्या फूड से मिल सकता है. पीपल मेनली डिपेंड ऑन द आयरन सप्लीमेंट्स, मेडिसिन एंड ऑल दिस थिंग्स. तो आप अपने सामने जो अवेलेबल है उसके साथ मतलब इस डेफिशिएंसी को कैसे मेंटेन कर सकते हो. वेरी वेल सेड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने बोला, दो इट वाज अ रैंडम स्पीच. ओके, so the suggestions, improvements, definitely I will say later on. Thank you, Pritha. And any others would like to come, say something on this? Any others would like to say something? Add something to this, or whatever. Okay, Debjani, how? What is your feedback about this role play? As a first, Ma'am, yeah, yes, ma'am. I think she did pretty well, and she's the first one who entirely saying in English. So this is a very good attempt, uh, great. and she Nowadays, was people trying her best. today, people are trying to at least manage in English today, which is a very good thing. Even if they are getting stuck, even if they are getting nervous, so at least they are trying to tell in English, interact in English. So thank you, Debjani, for choosing people जो ज्यादा हमने नहीं देखा at least. So you have chosen people and they have came out very well. Okay, so very nicely done. Any more suggestions on this? Any more uh, things to add on this anemia awareness camp? कुछ और आपको बोलना है आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया कैंप्स के बारे में? एनीवन वुड लाइक टू ऐड समथिंग? नो वन. That means Pritha has done a pretty well job. Okay, Purbasha, fine. Purbasha, try to say in English a little bit. Okay, before Purbasha, just 1 minute. As Purbasha, you have spoken before. I am trying to let others speak also. Adrija, did you speak before? Yes, ma'am. Acha. Anyone else? Okay, fine, fine, fine. Then no issues. Adrija, you tell first, then I'll go to Purbasha. We can incorporate some low cost iron rich foods, na? Right. That is a rural area camp, so they don't afford that meat and chicken for their daily life, He has daily diet, told na? actually mixed options, but Pritha, what you tell, try to make them understand. I was also definitely going to tell this in the last feedback, because I first want others to come up with the feedbacks. क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा आप लोग, you know, you people are strong in diet and all this, but from a general
पॉइंट ऑफ व्यू जब आप रूरल एरिया में जाते हो ना, तो लो फाइनेंशियल कंडीशंस, लोगों को लगता है कि हाई कॉस्ट सप्लीमेंट्स लेने से ही मेरा ये डेफिशिएंसी खत्म होगा. यू हैव गिवन देम मिक्स्ड ऑप्शंस जिसमें लो कॉस्ट हाई कॉस्ट दोनों ही है. तो you make them understand कि even in low cost you can have good amount of foods, and you can have some amount some things raising up at your home जो rural areas में common है. कुछ vegetables अपने घर पे लगाओ. Normally some people have keeping hens and this at their home also, so getting the eggs option sometimes they may be getting at home. So whatever you can do at home, you try that low cost options, which is a very good suggestion by Audrija. So these are some psycho. Why I am every time focusing diet की बात अलग है. Diet का तो बहुत कुछ controversies है. Lot of suggestions coming from different people. You have to first think कि हम किसको दे रहे हैं, to whom we are making this lecture. कॉर्पोरेट पीपल है तो इन लोगों के साथ कैसे डील करना है. कॉर्पोरेट पीपल बिकम वेरी स्टबर्न. जो भी आप उन लोगों को बोलते हो ना, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, टाइम नहीं मिलता है, तो यू हैव अ डिफरेंट वे टू मोल्ड देम, energize them. यहाँ पे क्या है, using simple language. Obviously we are using English here, which we don't use in local rural areas of India, but for the sake of English we are using English. But simple languages, simple names of food, right, making them understand कि simple low cost things can be very also which are available at hand, जिससे आप ये deficiency and इसका क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, जो कि आपने बोला, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, दे डोंट अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम आयरन डेफिशिएंसी एंड ऑल दिस थिंग्स. ये दिमाग में रखना, ध्यान में रखना. You can tell the family members कि if you have a lactating mother or pregnancy, if you have a woman who is pregnant at your home, तो ये आप लोगों का responsibility है उन लोगों को देखना. So they are actually there are mixed people, some of whom are maybe literate, some illiterate, some are ignorant about the things, some are not so knowledgeable about the things. So in any kind of role you are playing in your real life also, role play का मतलब क्या है, why this topics has been chosen, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में आपको डिफरेंट वे में बोलना है. अंडरस्टूड. चाइल्ड वाला टॉपिक अगर आप कॉर्पोरेट मदर्स को बोलते हो तो एक तरह से बोलोगे, रूरल एरिया में बोलते हो तो एक तरह से बोलोगे. सो दिस इज रोल प्ले. ओके, सो अदरवाइज वेरी वेल डन प्रीता. जस्ट समथिंग मोर स्पेसिफिक फॉर द ऑडियंस. विलेज वाले पीपल है ना, तो उन लोगों को थोड़ा और बोलना है. ग्रेट, वेल डन, वेल डन. যেতে যেতে ম্যাম এগুলো অভ্যাস হয়ে যাবে, কোনদিনও যাইনি মানে এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি এক্সপেরিয়েন্স that is why we are doing the role play. আমার ঠিক কিরকম ভাবে মানে বলা উচিত বা কি করা উচিত. I understood. সেই জন্যই আমরা রোল প্লে গুলো করছি, and as a first doing you for the first time you really have well done. Even if you are nervous, that didn't seem on your face. You have maintained a smile all throughout and maintained the speech, which is a very positive thing. To a continuous flow with a smile, एक nice expression में, क्योंकि normally लोग nervous हो जाते हैं, people get stuck, which was not happening with you. So when you this is why we are doing role plays, so that those who have not yet played these roles, you understand the things कि ऐसे करना होगा, right? That this is the purpose of the role plays. Very beneficial for everyone. Yes. And as because there are, you have friends and seniors who have already faced the situation, they are also able to help you. Fine. Any more suggestions on this? I have some I guess some people from communication classes have also attended, because many people are common from the communication and MNT5 batch. So some people exclusively from communication batch may be there. Acha, Purbasha, yes, sorry Purbasha, I forgot to ask you. Please unmute yourself. Yes ma'am, আমি শুধু সাজেশনটা দেবো তো? Yes. Whatever you want to say, suggestion, queries, feedback, जो भी देना है. Yeah. बेसिकली ये रूरल और अर्बन है, तो हम लोग पहले जाके उन लोग के साथ इंट्रोड्यूस करके उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि क्या एनीमिया क्या है. उसको ये भी नहीं पता है क्या एनीमिया है क्या, तो वो हम बता सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि हम लोग को हीमोग्लोबिन अगर कम हो, कितना कम होने से हो सकता है, सिम्टम्स क्या हो सकता है, क्योंकि उसके बाद सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि कारण उन लोगों को समझ में नहीं आता कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो वो हम बता सकते हैं सिंपल कि हेडेक है, उसका फैटिग है, वो मतलब पढ़ने जाते हैं बच्चे तो वो सो जाते हैं, उसका ज्यादा तक वीकनेस आता है,
और ज्यादा अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हम लोग का जो आँख के नीचे जो है उसका पेल हो जाता है, ऐसे बता सकते हैं हम लोग को। और उसको क्या क्या कारण होता है, ज्यादातर कारण हम लोग बताएंगे कि आयरन और फोलेट और B12 की विटामिन के डेफिशिएंसी से, बट बहुत सारे कॉजेज है मतलब आयरन सॉरी एनीमिया का। तो मैंने जो ऐड करना चाहते थे तो वो है कि एक तो हम लोग वो बताए हैं प्रीथा ने, हम लोग IFA टैबलेट और IFA सिरप तो दे सकते हैं, आयरन रिच फूड विद विटामिन सी, क्योंकि बताना है क्यों विटामिन सी देना है उसको। और एक इम्पॉर्टेंट है, ज्यादातर रूरल एरिया में हुकवर्म इन्फेस्टेशन होता है, तो वो हम बता सकते हैं कि उसको एल्बेंडाजोल जो टैबलेट होता है वो उसको लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है Okay. क्योंकि हाँ ये बता सकते हैं हम लोग को, इंक्लूड कर सकते हैं Great, हम great, लोग। sure, sure. So one thing definitely I would also like to add from Purbashas, because normally people in rural areas don't go for regular health checkups like in cities, or we people do who are working in different places ना। एक और भी चीज होता है जो हैंड वॉशिंग भी प्रॉपरली नहीं करता है ना, इसलिए हेल्थ चेकअप ऐसे नहीं करते जैसे हम लोग एक रेगुलर बेसिस में 6 मंथ्स में हेल्थ चेकअप करा लिया, या फिर ऑफिस से फ्री हेल्थ चेकअप, ये भी बहुत बेनिफिशियल है आजकल। आई हैव अ फ्रेंड हु वाज सेइंग दैट ऑफिस से हेल्थ चेकअप मिला था तो उसमें उसको पता चला कि क्रिएटिनिन का बहुत प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई सिम्टम्स नहीं था। फाइन, सो ये उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, दे विल नॉट गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप। सो सिम्टम्स बताना बहुत जरूरी है, विच आई वुड लाइक टू से फ्रॉम पूर्वाशास, विच पूर्वाशा सजेस्टेड, कि अगर आप लोग को ये सिम्टम्स है, हो सकता है आपको एनीमिया है, मैंडेटरी नहीं कि एनीमिया ही होगा, बट दीज आर सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। अगर है तो हेल्थ सेंटर्स में आप लोग जाओ, टेस्ट करवाओ, ओके, बिकॉज दिस कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल लेटर ऑन, ये समझाना है उन लोग। दैट इज वेरी गुड, ओके ओके। और लोकली अवेलेबल जो फूड है उसके ऊपर भी जोर देना है, locally स्ट्रेस देना है। yes, क्या अगर आप वो ले गो, सॉरी मैंने मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप वो ले सकते हो तो आपका उपकार मिलेगा उसमें। right, right, locally available, easily available, low cost. Yeah, focusing on that. Oishani, anything to say on this? Yes, ma'am. I have written in the chat box that include a menstrual cycle, because in this stage, mothers or teenagers neglected this stage, because in this time menstrual cycle जब होता है ना, बहुत सारा ब्लड Right, बॉडी से निकल जाता है, तो important for इस the टाइम girls, पे ladies, yeah. हाँ एनीमिया होती है। तो some girls are neglected these things. So I include this point that Yes, yes, please yes. mention So there menstrual should be cycle and special care on girls, especially at this girls, age group, at this age. adolescence or teenager period. ma'am. Absolutely, absolutely. Well mentioned. Okay, so very, very well feedback by everyone, and all the role plays were very nicely played by people without preparation, without anything. Randomly topics are given to you, so this was very nicely done. Devjani, are we able to do any more role plays? I guess it's already 9:10, 9:15 almost. So we will try to complete by 9:30. So any more easy role plays are left? Should we do, or you can give me? Yeah, there is one more, that is the TV interview about a diabetic. Between there is a two participant have to play the role. One is a dietitian and another one is an interviewer. Fine, fine, fine. So If people can are we ready, go with they can do it. जिसको participate आप choose करो, अगर वो ready है तो कर सकते हैं. In between, if anybody has emergency, you can leave. Otherwise, I will try to request you to be with us for the last role play, because एक एक role के play के बाद बहुत interesting conversation भी हो रहा है, and very nice, uh, coordination by both of you. Devjan, you can explain Okay, and try to so choose. Khushbu will explaining the topic and I will choose the participant. Sure, sure. Okay. So Audrija, are you there? Yes, definitely I'm there. Can you play the role of the interviewer? Yeah, definitely. Okay. Okay, and Charnok, are you there? Charnok? Yes, I'm there. Yes, Yeah. yes. So you will be a dietitian. Charnok also work as a diabetic educator, ma'am. So I think he can do that. So please, both of you, just Fine. keep your mic
and video on. Khushbu, please explain the scenario. Yes. So this will be a TV interview. So here you Advila will be the interviewer and Chana will be the dietitian here. And the topic is either you can speak on type 2 diabetes and its prevention, or you can speak on diabetes and the state of India, like what is the condition of India right now. So it depends on you what you talk, what is the topic you Awareness of diabetes or specifically on type 2, whatever is comfortable. prevention on type 2 diabetes is something that the topic is. So we can start. Is there any other question related to this? Chanak, you tell which is comfortable, so Adriya will coordinate the interview accordingly. Yes. Yes, I ready for the First of all, your mother tongue is Bengali or Hindi or anything else? Bengali, ma'am. Bengali. अच्छा चार तुम्हें try करो, okay English try करो, in between if you can't you mix with Bengali or if possible Hindi. ठीक है? Hindi English try करो, I will help you definitely. So Audrey, a little bit slow and ask him the questions. Don't worry about the language. So we are here to develop the language also. ठीक है? Yeah. So if you are facing too much problem, you can shift to Hindi. Fine. Yes, yes. Otherwise, try to do it in a mix of Hindi and English. Fine. So yeah, please start. I am working in a nursing home as a dietitian. So I randomly when I faced many of the questions in diabetes. So one I just jot down or in my mind such questions. I just ask him. Okay. टीवी जैसा होता है ना टीवी इंटरव्यूज में ऑडियंस के लिए कुछ क्वेश्चंस आप पूछोगे, मींस यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑडियंस. तो आजकल डायबिटीज के को लेकर अवेयरनेस एंड ऑल दिस थिंग, दिस इज द मोरलेस टॉपिक. अगर इसको टाइप 2 के बारे में डिस्कस करना है तो चाणक তুমি সেটাও করতে পারো, যদি ইন জেনারেল রাখতে চাও সেটাও রাখো, বিকজ ইউ আর ডায়াবেটিস এডুকেটর অ্যাজ দে টোল্ড. So keep it short and after that we will have some discussion. Okay, not too much questions, just keep it short. Okay, so my first question is rice or roti? Which carbohydrate main source is good? It is a TV interview, so you introduce it like that. Today we are having a program on this. I am Adrija. Okay. Fine. Okay. So get into the role, not random. Okay. So hello everyone. I am Audrija Ghosh, dietitian of Charing Cross Nursing Home, and I would like to focus on the topic which is very relevant nowadays, that is type 2 diabetes mellitus, which is very a very silent killing disease nowadays, and many more are suffering from that. So there is some basic questions which we have asked or have focused in our daily life. So I would like to ask Charnok about that questions. First is, which kind of cereals, that rice or roti, we would like to incorporate in our diet to maintain the type 2 diabetes mellitus? First of all, thank you, ma'am, and thank you, organize as a group platform. Today, I introduce the diabetes mellitus. तो जो भी क्वेश्चन मुझे किया था, जो रोटी और चावल के से रोटी बहुत You are facing too much problem, you can continue in Bengali, though I preferred Hindi or English. अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको बंगाली बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है? कोई है यहाँ पे? People who do not. अच्छा, चलो. I think, ma'am, apart from Sneha, everybody will understand Bengali. Okay, so we will try to translate. Chanak, you try to do it in Bengali, Hindi, but yes, you have to develop. ठीक है, आपको थोड़ा practice करना होगा.
Even if you are okay, थोड़ा सा Yes, English ma'am. Bengali mix करके बोलो. Yeah, please continue. হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে বলছি যে রুটি এবং ভাতের থেকে বর্তমানে হচ্ছে রুটিটাই বেশি প্রেফারেবল, বিকজ রুটির মধ্যে বেশি পরিমাণে হাই পরিমাণে যেটা ফাইবার রয়েছে, যেটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটাকে যেটাকে রিডিউস করে। তো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে রাইসের থেকে রুটিটাই হচ্ছে বেটার। Thank you for that. I have another question that sugar free or sucralose or sugar light that is help as a मतलब वो जो शुगर का जो कट ऑफ रहता है ना उस वो सब चीज हम चाय में या फिर कोई भी स्वीट डिशेस में ऐड कर सकते हैं एज अ स्वीटनर। हाँ, फिर से बोलिए। पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स ऑफ शुगर फ्री कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा होता है, दिस अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन कि शुगर फ्री हम सोचते हैं डायबिटीज होगा तो घर पे एक शुगर फ्री का बॉटल रख देंगे एंड दैट विल सॉल्व ऑल माय प्रॉब्लम्स। तो इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स लेना ठीक है नहीं है, ये कितना हेल्प करता है, तो ওটাইও জিজ্ঞেস করছে। সো জাস্ট গিভ আ শর্ট আনসার অন দিস। সুগার যে ফ্রি আমরা যে সবসময় নেব না, হয়তো কোনো কোনো অনেক সময় যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভালো লাগছে, একটু মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করছে, তখনই আমরা সেটাকে সুগার ফ্রিটা আমরা নিতে পারি, কিন্তু আমরা সবসময় কিন্তু সুগার ফ্রিটা আমরা নেব না। Any reasons for that? I'm asking on behalf of Adrija. Any reasons for that? Why you are telling ki na eta নেওয়াটা ঠিক না? Side effects of this or anything? হ্যাঁ, এর বহুত যে মানে প্রচুর সাইড এফেক্ট রয়েছে, যেগুলো হচ্ছে আমাদের হচ্ছে হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলকে এবং যে সমস্ত মানে হঠাৎ করে বাড়িয়ে দিতে পারে। টানক ইউ ক্যান ডু ওয়ান থিং, ভিডিওটা অফ রাখো বিকজ নেটওয়ার্কটা কাটছে তোমার। ওকে, অনেক সময় ভিডিওটা অফ রাখলে তোমার মেবি নেটওয়ার্কটা বেটার হবে। ওকে, ইয়া এন্ড ভিডিও অফ রেখে কন্টিনিউ করো। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে বিভিন্ন রকম যে সুগার ফ্রি গুলো যেগুলো হচ্ছে রয়েছে, সেগুলো আমরা হচ্ছে সবসময় হচ্ছে নেব না। যদি কখনো হয়তো আমাদের মনে হচ্ছে যে একটু মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করছে, তখনই আমরা নিতে পারি। তো কারণ যে আমাদের হচ্ছে শরীরের মধ্যে এগুলো বিভিন্ন রকম যে ব্লাড গ্লুকোজ বা যে সমস্ত হরমোনাল যে চেঞ্জেস গুলো হয় বা রেগুলেট নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর উপর বিভিন্ন রকম এফেক্ট হচ্ছে কেমিক্যাল যে রিয়াকশন হতে পারে, যার কারণে আমাদের বডি যে ব্লাড সুগার লেভেল বা বিভিন্ন রকম কমপ্লিকেশনও দেখা দিতে পারে। Okay, next question. We will also have this question. Any kind of snacks idea? Any kind of snacks idea? Snacks for diabetes, yeah. হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে স্ন্যাক্সে যে যে সমস্ত যে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট যে সমস্ত ফুডগুলি রয়েছে, সেগুলো আমরা হচ্ছে স্ন্যাক্সের মধ্যে, যেমন ডালিয়া এবং হাই ফাইবার। মনে রাখতে হবে যে ডায়াবেটিস যাদের রয়েছে তাদের সবসময় হাই কার্বোহাইড্রেট ফুডটাকে ইনটেক করতে হবে, যেটা হচ্ছে আমাদের শরীরের পক্ষে ব্লাড গ্লুকোজ, এটা হচ্ছে কমন একটা হচ্ছে বর্তমান দিনে কমন ডিজিজ। তো যেখানে আমরা যে সবসময় দেখতে পাচ্ছি প্রতিটা পরিবারের মধ্যে যেন একজনের মধ্যেই এই যে ডায়াবেটিস যে পেশেন্ট রয়েছে। তো এটা তো এখানে আমি যে বলবো যে স্ন্যাক্স এর মধ্যে হাই ফাইবার যুক্ত যেমন ডালিয়া, ওটস, তারপরে এইগুলো হচ্ছে ইনক্লুড করা যেতে পারে। এবং স্ন্যাক্সের মধ্যে আমরা নিতে পারি হচ্ছে ডবল টোন মিল্ক, যেটা আছে সেটাকে আমরা ইনক্লুড করতে পারি। Okay.
Thank you. And my last question is any type of fruits idea, as fruits are very sweet in taste, many of the fruits. So any type of fruits idea, the fruits हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई क्या कोई प्रॉब्लम है क्या कोई फ्रूट्स पे? হ্যাঁ, बहुत सारी फूड्स है जे जिसके भी जे हाई ग्लूकोज जे था, लाइक जे बनाना, जे ग्रेप्स। तो उसके बाद मैंने जे जो गुआवा और जे ऑरेंज जे ये भी जे स्नैक्स বা खाना खा सकता है। Which one to avoid and which one to take? কোনটা পাপায়া, নেবো না কোনটা নেবো? Just okay. You tell that. হ্যাঁ, রাই পাপাया, तो और ऑरेंज, गुआवा, तो ये भी ले सकता, खा सकता। और जो बनाना, जो ग्रेप्स, जिसके भी जिसके हाई ग्लूकोज है, तो उससे अवॉइड करना पड़ेगा। Fine, fine. Okay. Thank you. So let us Thank you. conclude with this. Drija, very nice, relevant questions you have thought of. Thank you, ma'am. Yes, যেগুলো খুব precise means detail এ না গিয়ে you have thought of very means common questions which come to our mind. Diabetes হলে firstly which I liked, sugar free নেবো কি নেবো না, sugar free নিলেই চায়ের সাথে sugar free খেলেই my all problems are solved, বাকি আমি যা খুশি করতে পারি। Okay, so this is a very common notion कि sugar free लेने से मेरा सब कुछ problem खत्म हो जाएगा। fruits क्या ले सकते, snacks क्या ले सकते, very very interesting। जो भी 3-4 questions था ना, बहुत commonly दिमाग में आता है diabetes patients का। From a general point of view I can understand this. What was the first question, Adrija? I forgot. প্রথম About the rice or roti, which is best for. fine, Hmm. fine. Okay, so yes, before we go to any feedbacks or anything, well done, the role play was well done. So I would like to pick up any one or two questions and let others also answer on this, whether you are a diabetes educator or not, from a general point of view. Yes, Debjani, you can ask people any of the 4 questions, like whether we should take sugar free, rice or roti, fruits, and healthy snacks. Okay, you pick up anyone and ask any one of the questions. Uh, okay, ma'am. First, I want to. Can I say something? Sure. Say on this. Sure. Okay. First thing, both are them doing very great role, and I would like to conclude something. First question is roti or rice. Of course, we know that most of the people who have diabetes, they are taking roti because, as Charnok mentioned, there's a high fiber content and this and that. But rice is not a bad option. Why? Because we read in our one of the classes where ma'am Vijaya ma'am was explaining why we should also intake rice. Rice is not मतलब अगर हम राइस ले तो हमारा ग्लूकोज लेवल स्पाइक कर जाएगा, दैट्स नॉट अ रीजन. We can take it, but in a moderation. We can take in a moderate quantity. Retrogradation process will be there. अब ये हम उनको रेट्रोग्रेडेशन अगर बोलेंगे दे विल वेरी कंफ्यूज, समझ नहीं पाएगा. तो वी कैन एक्सप्लेन इट इन आवर लेमैन टर्म कि आप राइस बना के आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो उसको, अगले दिन यू कैन टेक इट एंड हैव इट. क्या होगा उसका जो रेट्रोग्रेडेशन जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, वो हमारे जो एंजाइम्स है उन पे अच्छा काम करेंगे. तो इट देयर इज अ कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन. इट इज what to take, rice or roti. Of course you can take roti, but rice is not a bad option. We can also take rice, but in a limited or in moderation. This is the first. Of course, if anyone can add something on that, Khushbu, if you like to add something on this, or Purvasha Di. The second thing is about the snacks that Charnok was mentioning, dalia or something. Yeah, you can add, but not as a snack because वो थोड़ा सा भारी कर देगा ना, मतलब tummy को
डिनर के लिए, तो वी कैन टेक एज अ ब्रेकफास्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग एज अ स्नैक्स, वी कैन ऐड एज अ सैलड, मतलब मूंग सैलड और स्प्राउट सैलड कैन टेक, बिकॉज इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन जाएगा, वाइटामिन जाएगा अगर हम उस पे वेजिटेबल्स ऐड करें, ड्रॉप ऑफ लेमन ऐड करें, ये कर सकते हैं, मखाना वी कैन टेक, और वी कैन ऐड पोहा, पोहा हम ले सकते हैं, या ग्रीन टी वी कैन कंज्यूम दैट, ये आई कैन, मतलब ये मेरा फीडबैक रहेगा। और फ्रूट्स जो होते हैं वो चार्नोक ने बोला कि केला नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा है, उसपे शुगरी कंटेंट्स बहुत ज्यादा है, तो हमको देखना पड़ेगा किस पे ज्यादा शुगर राइज होता है हमें, तो वो बताना पड़ेगा, जैसे कि पपाया, ऑरेंज हो गया, क्या बोलते, पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया, दिस वी शुड अवॉइड, दैट्स वी शुड अवॉइड, बट वी कैन टेक गुआवा, एप्पल, बेरीज, strawberries, blueberries, these we can give, or ripe papaya we can add it. So Right. this is my feedback. If Great. Great. anyone please add something to this. Okay. Anyone, you can just raise your hands also if you have to add something on any of the questions, any of the question, whether it is the controversy of rice, roti, snacks, fruits, or yes, one question is left. I would especially like people to answer sugar free. The concept of sugar free, how good it is, how bad it is, थोड़ा लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है. That is also very relevant question. Anyone else apart from Debjani and Khushbu on the concept of sugar free? How would you explain this to people? And it is a TV interview. This is not something rural urban. This is for a mass audience. तो आप थोड़ा सा मतलब एकदम भी मतलब लेमैन लैंग्वेज नहीं, थोड़ा सा अच्छे से रीजंस बता सकते हो लोगों को, विच देवजानी इज इंसिस्टिंग, नॉट जस्ट सेइंग कि ये फ्रूट खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं खा सकते, तो इसमें आपका शुगर स्पाइक होता है, राइज होता है, सो दिस इज अ मास ऑडियंस, ठीक है, ये दिमाग में रख के anyone would like to highlight on this, so the concept of sugar free, good bad, ज्यादा क्वांटिटी खाने से क्या बैड हो सकता है क्या, anyone here, nobody on the concept of sugar free, anybody? Ma'am, Sumedha, can I say, ma'am? Adrija, fine, yes. शुगर फ्री जो होता है वो उसका ब्रांडिंग मतलब चेंज होता रहता है, मतलब कुछ दिन पहले ही शुक्रालू Great. थी, अभी स्टीविया है, वो ये इसको खाना चाहिए, ठीक है? अगर आप उसको थोड़ा सा सर्च करके गूगल में देखें तो to develop cancer if Breaking actually, yeah. carcinogenic, तो एक डिजीज है, मतलब डायबिटीज है उसके अंदर, और भी ये सब स्टीविया वगैरह हो गया या फिर सुक्रालोज हो गया या फिर शुगर फ्री हो गया, जो भी आप ऐड करके जा रहे हैं, तो chance to develop another disease in their body, so it's better sugar, just a sugar, Adrija, your मतलब voice is breaking a lot. Can you just rejoin once? yes ma'am, surely. Please do. Okay. In the meantime, anyone else on anything on this sugar-free concept also? I also felt I missed on one thing, कि the brands, the types of sugar-free is available in the market. Sugar-free एक ही चीज नहीं है, अभी इतना सारा brands है, इतना सारा varieties है, तो बहुत confuse हो जाते हैं हम लोग कि कौन सा लेना है, कौन सा थोड़ा सा अच्छा है, कौन सा बेटर है, कौन सा उतना ठीक नहीं है, अगर लेना भी है कितना क्वांटिटीज में लेना है, तो दिस आंसर्स आई वुड से दैट चार्नक, इफ यू आर अ डायबिटिक एडुकेटर, दिस हैज टू बी मोर रेलिवेंट. इंग्लिश, बंगाली, हिंदी तो छोड़ दो, द आंसर्स यू आर गिविंग ना आर इन अ वेरी लेमैन, यू आर गिविंग इन अ वेरी लेमैन टर्म. आपको थोड़ा और कॉन्क्रीट आंसर्स देना है कि शुगर फ्री ले सकते, नहीं ले सकते, कौन सा ले सकते, कौन सा ब्रांड लेना है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम, आप बहुत व्हाट आई वुड से ऐसे नॉर्मली बोल रहे हो कि हाँ और क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हमेशा नहीं ले सकते, कभी कभी ले सकते. नो, यू गिव सम कॉन्क्रीट आंसर्स. पीपल आर वेटिंग टू नो कि कौन सा लेना है. स्टीविया आ गया मार्केट में तो स्टीविया लेना है. या अद्रिजा, प्लीज कंटिन्यू. अनम्यूट मैम योरसेल्फ.
हाँ मैम, जो मैं बोल रही थी कि एक डिजीज को हटाने के मतलब दूसरा और डिजीज हो अगर जाएगा। दूसरा राइट, दूसरा और एक डिजीज आ जाता है तो इट्स बेटर टू टू नॉट हैव शुगर फ्री। अगर आप शुगर ले लो तो भी अच्छा, बट शुगर फ्री नहीं लो। मतलब शुगर ले लो इन अ मॉडरेट अमाउंट तो भी अच्छा। मॉडरेट अमाउंट को भी समझना पड़ेगा, पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि वो मॉडरेट अमाउंट मीन्स 5 ग्राम्स या फिर चम्मच के चम्मच ले ही जाओ। हाँ, तो वो भी समझना पड़ेगा पेशेंट को। और ऑब्वियसली अभी शुगर फ्री should be avoid for the diabetic patient okay. So or you are telling totally to avoid other. this sugar freeze. Hmm. Okay. Okay. Any controversies on this? Any other opinions on this? Yes, ma'am. Yes. So, actually, currently, the sugar free that we used to get earlier, she's talking about the branding, no? So that is the thing. The जो sugar free green है ना, that is stevia. 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 Stevia is considered even by WHO. There is a limited amount, around 4 mg, something that can be taken daily. So Okay. stevia is something that's safer. So we can go for sugar free green. I guess that comes from a leaf, if I'm not wrong, Yes. isn't it? Yeah. Yes, it does come from, it is a plant-based thing. So we can be taking that, and that is sugar-free green. Earlier, the sugar-free that we were getting, they are believed to hamper our vitals. So daily consumption of that will not be good, and especially using them for cooking our sweet dishes and all, it is not an option to be done for a diabetic patient. Also, as Advija mentioned, that So using none of the sugar fruits we should use for cooking, right? It should be used in cooked yes, food, stevia already cooked, yeah. yes, if we are using stevia for sweet dishes, that too not regularly, because Fine. its amount is important. How much amount we are having in a day, there is an upper limit to that. And if you Yeah. are crossing that, of course, that is going to hamper us. So Fine. we can, and when we are cooking a sweet dish, it will not mean that there will be a limited quantity for only one person. It will be for maybe 3-4 persons, and we'll not know how much quantity is needed. So at that point of time, it will be difficult to manage. But then one thing can be considered is, if the patient's sugar levels are in control, and he is regularly taking the measurements, and he knows, then even taking sugar in very limited quantity is good. As Advija said, that in those cases, even the sugar patients can be taking a little bit of sugar, but then not going for sugar free, of course, is a good thing. Sugar free green we can go for, because that is stevia, but in limited quantity. Excessively we cannot abuse that. Fine, fine, fine. Great. So obviously, whenever we are having one topic, thank you, Khushbu. Thank you for both your opinions. I'm saying I'm not going into intricacies of diet, but my overall feedback on this will be both Audrija and Khushbu. Thank you for your feedbacks. I also got to know a lot of things here, but I would like to say here is like Chanak has left already, or he is there? Not able to see him. He has left. He has already left before getting the feedback. Okay, so we will be also ending the class. So I'm not giving the feedback. Chanak left, na? Acha, he's there. Hello, Chanak, ma'am. what I would like to say, English Hindir kotha pore, so you practice on that. Ma'am. Yes, bolo. হ্যাঁ ম্যাম, আমার এখানে কারেন্ট চলে গিয়েছিল, এই জন্য আচ্ছা আচ্ছা, it's fine. Okay, so আমি যেটা তোমার ফিডব্যাক দেব যে ইংলিশ হিন্দি ইজ ওকে, বাট ওয়েন এভার ইউ আর কাউন্সিলিং পেশেন্টস, টিভি ইন্টারভিউ ছেড়ে দাও, হয়তো ইউ উইল নট গিভ টিভি ইন্টারভিউজ রাইট নাও, ইউ মাইট গিভ ইন ফিউচার অলসো, you never know. So you give some reasons to them, and the reasons in a easy form. Just don't give in a confusing way. ना सब हमेशा लेना ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत ले सकते हो, ऐसे नहीं. आपको समझाना होगा कि देखिए मार्केट में बहुत सारा ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स आप थोड़ा कम अमाउंट में ले सकते हो, ज्यादा अमाउंट लेने से ये साइड इफेक्ट होता है. तो आप कोशिश करो कि शुगर अमाउंट, क्योंकि देखो एक आदत हो जाता है. लाइक प्रीवियसली आई आल्सो कुडंट यूज मींस कंज्यूम टी विदाउट शुगर. अभी टी विदाउट शुगर इज फाइन फॉर मी. बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है. तो यू हैव टू टेल, आपको थोड़ा रिड्यूस कर करके शुगर अमाउंट को कम करना है. तो गिव सम रेलिवेंट आंसर्स. ओके, लाइक वेन एवर गिव क्लैरिटी. आपके काउंसलिंग में जो प्रॉब्लम है या आंसर्स में जो प्रॉब्लम है ना, चार्नक যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্ল্যারিটিটা নেই. ফর এক্সাম্পল fruits also, suddenly I was actually getting confused ki which are the do's, which are the don'ts. You started with banana and maybe grapes or something, and then started to say on guava. So I firstly felt ki guava bhi avoid karna hai. তো যখন কাউন্সিলিং করব, একটা জিনিস মাথায় রাখবো, বি ভেরি ক্লিয়ার.
give the clarity to them, এটা অ্যাভয়েড করব, এটা করব না, উইথ রিজনস, এটাতে এই প্রবলেম হয়। নাওএডেজ রুরাল বলো আরবান বলো, এভরিওয়ান ওয়ান্টস টু নো দ্য রিজন, কেন আমাকে অ্যাভয়েড করতে বলছেন, কেন আমাকে এটা বারণ করছেন। জাস্ট যদি বলে দাও সুগার ফ্রি খাবেন না, হাজারটা কোশ্চেন মাথায়। सो यू हैव टू गिव क्लैरिटी टू योर पेशेंट्स। टीवी इंटरव्यू हो, कहीं पे स्पीच हो, कहीं कोई भी चीज हो, you have to give clarity to your patients, যেটা চার্নক তোমার মিসিং আছে। ওকে, সো প্র্যাকটিস মোর অন দ্যাট, বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য নলেজ, জাস্ট সেটাকে এক্সপ্রেস আর একটু বেটার ওয়েতে করতে হবে। আনসার্স গুলো কনফিউজিং হয়ে যাচ্ছে। From a layman point of view, I can say I was little bit confused, especially during, and when you said about the snacks, তুমি যদি শুধু ডালিয়া or what you said, oats, or what was the other option, ডালিয়া and what was the second option you gave for snacks? I just forgot. কি ছিল সেকেন্ড অপশনটা? ডালিয়া and what you say? ম্যাম ওটস বলেছি। ম্যাম Oats maybe, ma'am. বলেছে। ওটস ওটস এবার যদি আমি ওটসও বলি, ওটসটাকে আমি স্ন্যাক্স ফর্মে কিভাবে নেব? স্মল চিল্লাস or something that can be snacks. Suddenly if you say dalia and oats, this can be actually whole meal, which Debjani was also telling. So give them the clarity. अगर डालिया भी यूज करना है, लोग समझ लेंगे अच्छा एक बड़ा बोल का डालिया खा लेंगे स्नैक्स में, फिर ओवर ईटिंग हो जाएगा ना। सो स्नैक्स इज अ स्मॉलर मील, विच इज अ फुलर मील। ये तो समझना होगा। सिर्फ डालिया बोल दोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे कितना डालिया खाना है, कितना अमाउंट में खाना है। तो व्हाट इज मिसिंग इन योर काउंसलिंग चार्नक इज क्लैरिटी। একটা জিনিস বলবো, সেটাকে ক্লিয়ারলি বলবো, ডালিয়া ওটসটাকে কিভাবে খাবো স্ন্যাক্সে, কিরকম প্রিপারেশনসে, রেসিপি না, বাট অ্যাটলিস্ট কিরকম কোয়ান্টিটিতে খাবো যদি আমাকে ডালিয়া ওটসই দিতে হয়। বাট what Debjani is telling is also right. You can give them in meal, because rice wheat নিয়ে একটা, রাইস or রুটি নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি হয়। ইফ দে প্রেফার ডালিয়া or ওটস, দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেক ইট ইন দ্য লাঞ্চ or ডিনার। আমি স্ন্যাক্সে অন্য অপশন দিয়ে দেবো। সো গিভ দেম দ্য ক্ল্যারিটি। জাস্ট একটা ওয়ান ওয়ার্ড আনসার বলে দিলে কিন্তু পেশেন্টস উইল গেট কনফিউজ, ওরা ভুলভাল ডায়েট ফলো করবে, and the blame will come upon you. So this is a general point of view on the process of counseling, on the process of any kind of counseling. Whether you are doing patient counseling, whether I do student counseling, we need clarity. যে কোনো ভাষাতেই কথা বলছি, the clarity, আমি যে কথাটা বলছি, I should explain it properly to the people. Okay, Charno, have you understood what I say? Yes, ma'am. হাফ Ma'am, হচ্ছে, actually, হাফ হচ্ছে, রাইট? পুরোটা বোঝাতে হবে। ইভেন ইফ ইট ইজ আ টিভি ইন্টারভিউ, আরো অনেক কনফিউজ, কারণ তোমার সামনে লোক নেই, দে উইল নট কোশ্চেন ইউ। তো এরকম যদি মাস ফর্মে লোককে বোঝাও, ইউ গো টু আ ক্যাম্প অর টিভি ইন্টারভিউজ, পিপল উইল নট আস্ক ইউ, অ্যান্ড দে উইল হাভ দ্য ইনফরমেশন। তারপরে কোনোদিন গিয়ে বলবে যে আই হ্যাভ সিন আ টিভি ইন্টারভিউ গিভেন বাই চার্নক, অর আই হ্যাভ সিন আ সেশন গিভেন বাই চার্নক, যেখানে ও এটা বলেছে। তো হাফ বুঝলে ভুল বুঝবে, অ্যান্ড দে উইল অ্যাপ্লাই ইট রংলি। ফাইন, সো গিভ দেম দ্য ক্ল্যারিটি। তুমি যেটা বলছো সেটা ক্ল্যারিটিটা দরকার। ফাইন, আই হোপ আই এম ম্যাম, এবল। হ্যাঁ, বলো। অ্যাকচুয়ালি আজকে এটা ফার্স্ট টাইম, তো এই জন্য আমি কনফিউজড হয়ে গেছি, তো যার No, জন্য it's প্রবলেম fine. হয়ে গেছে। It's fine to get confused, nervous, but তোমার কিন্তু as a diabetic educator, knowledge is much more than me. তো তোমার কমন কোশ্চেন এর আনসার্স এখানে কিন্তু খুব সিম্পলিফাই করে দিয়েছিল। who was playing the role of interviewer, I just forgot কে ইন্টারভিউটা হচ্ছিল। Odrija. That's Odrija. Odrija, right? So Odrija has simplified the questions for you. ও খুব ছোট ছোট, খুব ছোট ছোট কোশ্চেন্স ও রেখেছে ইন্টারভিউয়ার, রাইট? সো ও কিন্তু তোমাকে মানে ইন জেনারেল বলতে বলেনি ডায়াবেটিস নিয়ে একটা স্পিচ দিন, দেন ইট উড হ্যাভ বিন কনফিউজিং। ছোট ছোট কোশ্চেন্স রেখেছে, যেটা তুমি খুব সিম্পল ওয়েতে, আমি তোমাকে আমি বাংলাতেই অ্যালাউ করলাম লাস্টে, বাট খুব হাফ আনসার্স গুলো হচ্ছে, রাইট? So it is not it is the first day in communication class, but these are only question answers. তোমার রোল প্লেটাতে she made it easy as question answers, but answers গুলো কিন্তু ভীষণই, I would even not say it's 50%, it's 30% information you are giving to the public, which is very confusing. So please practice on that. Overall আমি যেটা বলবো, from today's role play, things to keep in mind whenever you are communicating. So we are just ending in 2-3 minutes. Whenever you are communicating to a group of people, remember the audience. In that way you represent your speech. Wherever you are going, start with a smile and energy, whether rural, urban, corporate, jetai hok. People connect with energy. When you are energetic, you are smiling, people will connect with you. গিয়ে একটা সিরিয়াস মুখ চোখ করে আমি একটা মানে স্পিচের মতো বলা শুরু করে দিলাম, পিপল উইল ফিল ভেরি
afraid, either fear, they will be afraid of things, or they will not be interested. So start any speech with, if it is a speech, if you are giving to a lot of people, start with a smile, start with a catchy line, start with a question. These are some tips to start any ক্যাম্পস, মানে যেটা কমিউনিটি হতে পারে, কর্পোরেট হতে পারে, if you are going there. If it is a one-to-one patient counseling, things to keep in mind when you are counseling patients: let them speak. If they are giving you the information you need, you make a framework to make this particular diet. What kind of information I need? For example, that child's mother, to make the diet chart for this child, her problem is immunity problem. Now for a child with immunity problem, I have to make a diet chart. What are the informations I need? You just jot it down. से इंफॉर्मेशन, अगर वो इंफॉर्मेशन वो खुद देते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं देते तो आपको क्वेश्चन कर करके वो इंफॉर्मेशन निकालना है. दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ वन टू वन काउंसलिंग. ओके, एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, चाहे वो डाइट हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, is asking things, bringing out the information. The more information you have, the better will be your counseling. अगर आप हाफ इंफॉर्मेशन सुन के काउंसलिंग स्टार्ट कर दोगे तो योर काउंसलिंग विल नॉट बी इफेक्टिव. Like a major thing missed, which was pointed out by someone else also, child and age stuff. I'm just giving an example. Mistakes happen with everyone. I'm not pointing out your mistakes. So you have to keep in mind the major informations I have to bring up. Fine. So one-to-one counseling in hoche main thing is probing, getting the information, an empathetic approach. If it is a irritated patient, কিভাবে approach করবো? If it is a very stubborn patient, আমি কিছু করতেই চাই, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, उसके साथ कैसे deal करना है? Right? So you cannot be very polite with them. You have to make them understand that either you follow this or you are not going to, or your problems will exist. So stubborn patients can be there, very afraid nervous patients can be there, जिसके साथ empathy के साथ deal करना है. Different approaches for different patients. Questioning them and understanding them. Take first 5 minutes to understand the psychology of the patient. Diet से पहले आप उनका psychology समझो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम पहले ही ना डाइट में चले जाते हैं. साइकोलॉजी, कुछ मदर्स ऐसे होते हैं, दे आर वेरी लेजी. कॉर्पोरेट है, क्या है, मुझे खाना बनाना ही नहीं है. तो अगर हाउस हेल्प से भी बना रहे हैं तो उसको कैसे डायरेक्ट करके कैसे खाना बनाना है बच्चों के लिए या घर के लिए, दैट यू हैव टू. सो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट, क्वेश्चन देम, टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, देन डू द डाइट काउंसलिंग. Okay, so because today all the role plays were about diet counseling or some kind of nutritional speech somewhere. Okay, these are the tips. So just keep in mind, and otherwise more or less you people all have managed in English and Hindi somehow. Charnak, practice a little bit. I am there to help you. If you need my help personally also, I will try to help you. Practice some short speeches in English. कुछ एक topic ले लो, जैसे ये diabetes वाला topic, आप लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लो, फिर उसको बोलो इंग्लिश में, देन ওটার একটা রেকর্ডিং বানাও, দেন ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান সেন্ড ইট টু মি. ফাইন. ছোট 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 স্ক্রিপ্টেড বানিয়ে বানিয়ে প্র্যাকটিস করো. প্রথমে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করো, লেখো, দেন ওটা বলো, দেন ওটা রেকর্ডিং করো. সো বিকজ ইংলিশ উইল বি আ পার্ট অফ ইউর লাইফ. ইন্টারভিউ ফর্মাল সিচুয়েশনসে ইংলিশটার একটা, অ্যান্ড এমএনটিতে খুব ইন্ট্রিকেটলি পার্সোনালি হয়তো আমার পসিবল হয় না সবাইকে focus kora. Still, if you want help from me, I'm always there to you. But in my spoken English or other classes, that is possible. Okay, but all of you done very well. Those who have missed, those who have not been able to participate today, definitely give your names. Next day we are having role plays, so we will definitely try to include others. Thank you Debjani and Khushbu for handling it so nicely. Okay, you have really done a great job. Thanks to everyone. So Thank good you, night. ma'am. Good night. Thank you, Thank you, ma'am. everyone. Good Good night, night, ma'am. everyone. Good night, ma'am. Ma'am. Thank you so much, ma'am. Good night, ma'am.